In this video, we will solve a numerical based on the Hardy-Cross method. Here, we need to calculate the discharge in each pipe of the network which is shown in the figure. As we can see, at the junction, the discharges are given to us, and for each of the pipe, the R values are also given to us. Our first step is trial distribution of discharges. Now here, as you can see, the inflow at node A is 90, outflow at node B is 30. Then we have the R values for each of the pipe. Outflow at C is 40 and outflow at the node D is 20. Here at this node A, the inflow is 90 and continuity equation must be satisfied. So we'll assume the outflow for this pipe and this pipe. This one as 60 and this one as 30. देन जंक्शन बी पे जो इनफ्लो है वो 60 है, तो आउटफ्लो भी 60 होना ही चाहिए. अभी 30 जितना आउटफ्लो ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो यहाँ इस पाइप और इस पाइप के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं. यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग 20 एंड दिस इज़ 10. देन एज यू कैन सी दैट 30 एंड 10, तो वहाँ पे टोटल हो जाएगा 40 इनफ्लो डी पे. आउटफ्लो 20 का हो रहा है, तो इसका मतलब इस पाइप में जो आउटफ्लो होना चाहिए वो 20 का होगा. अब ये 20 + 20, तो आउटफ्लो 40 का हो जाता है. सो फॉर द पाइप नेटवर्क, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो हर नोड पे सेटिस्फाई हो गया. अभी ये दो लूप्स फॉर्म होंगे, वन इज़ ABD एंड द सेकेंड वन इज़ BCD. अब जो हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट ट्रायल. उसके लिए विल बी मेकिंग अ टेबल लाइक दिस फॉर लूप ADB एंड सेकेंड टेबल हम लोग बनाएंगे लूप DCB के लिए. फर्स्ट कॉलम में आएगा पाइप, देन R, देन Q0, देन HF इज इक्वल टू R Q0 स्क्वायर एंड देन वी हैव 2R Q0. यहाँ जो हमारा फर्स्ट लूप है विच इज़ ADB, उसके लिए पाइप्स है AD, देन DB एंड AB. दैट विल राइट हियर. R की जो वैल्यूज़ दी हुई है AD के लिए है R इज़ इक्वल टू 4, देन फॉर DB R इज़ इक्वल टू 1 एंड फॉर AB R इज़ इक्वल टू 2. और Q0 की जो वैल्यूज़ हमने अज्यूम की है विच आर अज्यूम डिस्चार्जेस, दैट विल राइट हियर. फॉर AD इट इज़ 30, फॉर DB 10 एंड फॉर AB 60. देन विल फाइंड दिस HF इज़ इक्वल टू R Q0 स्क्वायर विच इज़ 4 into 30 square, so it will be 3600. then 1 into 10 square. अभी फ्लो की डायरेक्शन देख लेते हैं, जैसे कि 30 के लिए क्लॉकवाइज है, 10 और 60 के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन आएगी, दैट्स वाई इट विल बी -1 into 10 square which is -100 and this will be -2 into 60 square which is -7200. then we'll find 2R into Q0, 2 into 4 into 30 which is 240, then 2 into 1 into 10 which is 20, then we have 2 into 2 into 60 which is 240. then we'll find the summation which is sigma HF and sigma 2R Q0. sigma HF is -3700 and sigma 2R Q0 is 500. Now we'll find delta Q, which is the correction factor, equal to -3700 upon 500. And the equation for delta Q is minus sigma R Q0 square upon sigma 2R Q0. That's why it will be minus minus plus. So delta Q will be equal to 7.4. The same table will create for loop DCB. Pipe R Q0 HF is equal to R Q0 square and 2R Q0. For the loop DCB, we are having 3 pipes which is DC, CB and BD. Now R values are given to us. For DC it is 2, CB 1
and for BD R is equal to 1. Then Q naught, which is the assumed discharges, 20, 20 and 10. Then we'll find HF, 2 into 20 square, 800. Then for CB, the flow direction will be anticlockwise. For DB, it will be clockwise. And for DC also, it will be clockwise. Only for CB, it is anticlockwise. So minus sign will come. Then for BD, it is 1 into 10 square, which is 100. Then 2R Q naught, 2 into 2 into 20, which is 80. Then 2 into 1 into 20 equal to 40. Then 2 into 1 into 10, which is 20. Then again we'll do the summation. Sigma R Q naught square, or we can say sigma HF, which is equal to 500, and sigma 2R Q naught is equal to 140. Then we'll find delta Q, which is minus sigma R Q naught square upon sigma 2R Q naught. So it will be minus 500 upon 140, that is minus 3.57, which we can say it equal to minus 3.6. Now this is positive. So for clockwise direction, it will be added, and when my flow is in anti-clockwise direction, then it will be subtracted. Same way here for the loop DCB, we have got negative value. So delta Q will be subtracted from the flow in the clockwise direction, and it will be added to the flow in the anti-clockwise direction. Let's find the corrected flows for each of the pipes. First one is AD. For AD, the flow direction is clockwise. So it will be Q naught plus delta Q, that is 30 plus 7.4, which is 37.4. Then we are having pipe DB. For DB, we have anti-clockwise direction, that is the flow is in anti-clockwise direction. So it will be Q naught minus delta Q, that is 10 minus 7.4. Now this pipe is common in both the loops, so we can either write it as DB or we can write it as BD. Then for AB, again anticlockwise direction, so it will be 60 minus 7.4, which is 52.6. लूप DCB के लिए हमें डेल्टा क्यू नेगेटिव मिला है, हम सिर्फ वो वैल्यू कंसिडर करने वाले हैं. वी वोंट बी कंसिडरिंग द साइन. साइन के हिसाब से हमने ऑलरेडी बता दिया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए उसे सब्ट्रैक्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए उसे ऐड करना है. जैसे कि पाइप DC हो गई तो उसमें फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज़ 20 माइनस 3.6. प्लीज़ ऐसे मिस्टेक मत करना कि आप लोग लिख के आओ 20 माइनस 3.6, ये हमें नहीं करना है. माइनस 3.6 है तो हम लोग सिर्फ उसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे, विच इज़ विल कंसिडर 3.6. और जब डेल्टा क्यू नेगेटिव आता है तब हमने फ्लो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग साइंस ऑलरेडी डिसाइड की हुई है. अभी वी हैव पाइप BC. For BC, the flow is in anticlockwise direction, so it will be added 20 plus 3.6. And for BD, अभी BD दो लूप्स में है. एक लूप में हमें ऑलरेडी वैल्यू मिल चुकी है, विच इज़ 2.6, तो वही वैल्यू हम लोग वापस यूज़ करेंगे. And then the flow is in clockwise direction, so it will be 2.6 minus 3.6, which is minus 1. So final value BD के लिए हो जाएगी minus 1. Once we have completed our first trial, here in the diagram we'll have to show the flow values. Arrow के साथ हमें flow values दिखानी है. For this pipe there will be downward arrow because we have got it as minus 1, that's why downward arrow. So this way we have shown it. Now again we'll go for the second trial. Same way we have to prepare a table, pipe R Q naught HF and 2R Q naught. Pipe and R column will be the same, Q naught values have changed. Now HF will be 4 into 37.4 whole square, which is 5595.
then 1 into 1 square, which is 1, and then for AB, the flow direction is anticlockwise, so it will be minus 2 into 52.6 whole square, which is minus 5533.5, and 2 are Q naught column. It is first one for AD, it will be 2 into 4 into 37.4, which is 299.2. Then for DB, 2 into 1 into 1, which is 2. And for AB, 2 into 2 into 52.6, which is 210.4. Then we'll find sigma R Q naught square and sigma 2 R Q naught. Sigma R Q naught square is equal to 62.54 and sigma 2 R Q naught is equal to 511.6. Then we have delta Q, which is equal to minus sigma R Q naught square upon sigma 2 R Q naught. So it will be minus 62.54 upon 511.6, which is equal to minus 0.122, which we are taking it approximately equal to minus 0.1. Then for the loop DCB, the Q naught values are 16.4, 23.6 and 1. Here we'll have to see the flow directions again. 2 into 16.4 whole square. Let me just show you the flow direction. For both of these pipes it will be anticlockwise, and for DC it will be clockwise. So for DC it will be positive value, which is 537.9. Then this is 2 into 2 into 16.4, which is 65.6. Then for CB and BD, the flow direction is anticlockwise. That's why minus sign will come. Minus 1 into 23.6 whole square, which is equal to minus 556.9. And 2 into 1 into 23.6, which is equal to 47.2. Then we have minus 1 into 1 square. It will be minus 1. And 2 into 1 into 1, which is 2. Then we need to find sigma R Q naught square, which is equal to minus 20, and sigma 2 R Q naught, which is 114.8. Then this will be minus 20 upon 114.8, which is equal to 0.174. Approximately we take it as 0.2. Again we'll find the corrected flows for each of the pipe. Here we are having the sign conventions, which I have already written. For negative delta Q and for positive delta Q. For the pipe AD, DB and AB, which is in the first loop. And for the second loop we have DC, CB and BD, or we can say DB, BD or DB. Now for the pipe AB, the flow direction is anticlockwise. Again delta Q नेगेटिव आया है तो वहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू ही कंसिडर करनी है. दैट्स वाई दिस विल बी 52.6 प्लस 0.1. वाई? बिकॉज ए बी में जो फ्लो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने ऐड किया. अभी डी बी और ए डी के लिए फ्लो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. So for DB we got it as 1 minus 0.1, which is 0.9, and 37.4 minus 0.1, which is 37.3 for AD. Then for CB and BD we are having the flow direction as anticlockwise. BD के लिए ये वाली वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी, which is 0.9. डेल्टा Q की जो वैल्यू आई है वो 0.2 आई है, which is positive. तो हम लोग फ्लो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इस वजह से सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू को. 0.9 माइनस 0.2. CB के लिए भी फ्लो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सो विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यू. 23.6 माइनस 0.2 विच इज़ 23.4. DC के लिए हम लोग ऐड करेंगे, विच इज़ 16.4 प्लस 0.2 इक्वल टू 16.6. नाउ वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस इन आवर डायग्राम. ये जो वैल्यूज़ आई है ये हमारी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्चार्जेस हो जाएंगे हर पाइप के लिए. वाई? बिकॉज जो डेल्टा क्यू की वैल्यूज़ आई थी लूप ए डी बी के लिए वी गॉट इट एज माइनस 0.1, एंड फॉर लूप डी सी बी वी हैव गॉट इट एज 0.2 विच इज़ स्मॉल, एंड
So we'll stop our trial and error procedure. And finally we'll write the discharge in each pipe. For AD, it is 37.3 from A to D. AB के लिए एरो डायरेक्शन जा रहा है from A to B, which is 52.7 from A to B. DB के लिए एरो डायरेक्शन जा रहा है from D to B, so it is 0.7 from D to B. Then we have BC, which is 23.4 from B to C. And we have DC, जिसमें flow direction है from D to C, and the flow value is 16.6. So this way, at the end, you need to show this type of diagram, and you will have to write the values for the discharge in each of the pipe. This way, we can solve the pipe network problem using the Hardy-Cross method. Thank you.